Morning student, hope so you are fit and fine at your home. Today we are going to discuss our chapter number 6 more on Python. Regarding this chapter we are already discussed. Now today we are going to discuss back exercise of this chapter. Okay, so let's continue student. Now we are going to discuss more on Python back exercise of this chapter. Firstly we are going to discuss filling the blanks. Okay, now one by one we are going to discuss. The order in which operators are evaluated is called precedence of operators. Okay, the valid combination of the both operand and operator make an expression. क्या बनाता है वो expression which return the computed result. Okay, so dash operator is used to concatenate or join टू और मोर स्ट्रिंग. बेटा स्ट्रिंग टाइप डाटा को जब ऐड करते हैं तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? concatenation operator. In Python the flow of execution is altered by the use of कंट्रोल स्टेटमेंट. किसके यूज से हम करते हैं फॉलो को? कंट्रोल स्टेटमेंट से. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर फिलअप्स. द डैश कंट्रोल स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन द आइदर टू डिफरेंट एक्शन इज टू बी परफॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशनल expression. So where the student you learned that there are the three type of control statement: if statement, if else statement, and if else statement. So if you have only one choice, then you use the if condition. If you have the two different choices, then you use the if else statement. Okay, now here answer our if else statement. In the Python conditional statement is terminated with, जो Python statement होती है वो किससे terminate होती है? colon से. Okay, now we are going to discuss state true and false. Now we are going to discuss true and false. So first true false, an operator does not need any operand perform any operation. ये आपको बोल रहा है कि आपको कोई भी ऑपरेंड की नीड नहीं है. मीन्स आपके पास ये ऑपरेटर साइन है और इसमें आपको कोई भी ऑपरेंड नहीं चाहिए. मीन्स अगर हम सिंपल इस ऑप्शन को यूज करते हैं, इस ऑप्शन को ही यूज करते हैं तो क्या होगा? आप इसको अकेला इंडिविजुअल ऐड कर सकते हो किसी भी नंबर को. विदाउट ऑपरेंड यू कैन ऐड. सो यू नीड हेयर ए एंड बी वैल्यू. सो आफ्टर दैट यू कैन apply the operator. So that's why its answer is false. Unary operator can be used on more than 3 operand. Means जो हमारा unary operator क्या होता है उसमें only एक ही operand होता है. और यहाँ आपको बोला हुआ है unary operator use more than 3 operand. Means इसमें 3 operand यूज करें. जो हमारा unary operator है, unary operator a plus this type of our unary operator. Okay, so here we write only this, but statement telling this unary operator can be added more than 3 operand. Okay, so answer is false. Exponential operator is used to calculate the power of number. Yes, this is right answer, that is true. Higher precedence operator are operated before the lower precedence operator. यही होता है बेटा, जो हमारा प्रीसीडेंस ऑर्डर होता है वो जिसकी सबसे हायर पावर होती है उसी को सोल्व करता है सबसे पहले. सो दैट इज आंसर ऑल्सो ट्रू. नाउ नेक्स्ट if else if statement are used when we have evaluated only one condition. क्योंकि बेटा यहाँ पे if के बाद else एग्जीक्यूटेड होती है और फिर हमारे पास more, if you have the more than choices then we use this statement, but there is only one condition. So here we use the if condition. So that's why answer is false. Iterative statement enable the execution of a set of statement to repeat till the condition is true. यस, जो हमारी इटरेटिव स्टेटमेंट है तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक आप एग्जैक्ट जो आपकी डेस्टिनेशन है उस पर रीच नहीं कर जाते हो. सो वो तब तक रिपीट होता रहता है. तो दैट इज आंसर ऑल्सो ट्रू. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. सो फर्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इज सुमित इज कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना चाहता है बाइनरी नंबर में. ही नीड टू कैलकुलेट द रिमाइंडर इन ईच स्टेप. सभी स्टेप्स में वो रिमाइंडर को कैलकुलेट करना चाहता है. So which operator do you suggest him to use
for this task? So their answer is remainder operator. Remainder operator used to calculate each step remainder. Okay, so this is answer. Now next application based question. Arif father is a businessman. He want to determine whether he made a profit and loss. There are the two conditions based on the renew figure. Okay, so just the appropriate conditional structure he can use to solve the problem. So we have the three condition. If condition we use for the single condition means, and if you want to use the two condition, then we use if else statement. Which are answer? If else statement we can use because there is a profit and loss, two conditions here. So our answer is if else statement. Now next is multiple choice questions. So we are going to discuss multiple choice questions. So first question is the value on which the operator work are known as. So there are the options operand, data एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. सो यहाँ पे क्या बोला है कि ऑपरेटर जो हमारा ये ऑपरेटर होता है बेटा, ये वाला ऑपरेटर वो किस पे वर्क करता है? ऑपरेंड पे. किस पे वर्क करता है? ऑपरेंड पे. सो नाउ हियर आवर आंसर इज ऑपरेंड. नाउ नेक्स्ट, फ्लोर डिवीजन इज द सेम डिवीजन. In this chapter we have discussed there are the two type of division operator, floor division and division. Floor division give the decimal, floor division give the value in form of integer, but decimal division operator give the value in form of decimal. So now we are going to discuss this statement is true in some cases and false. मीन्स दोनों ही ऑपरेटर हैं, दोनों ही डिवीजन ऑपरेटर हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हमारा अगर इंटीजर वैल्यू को इंटीजर वैल्यू से ही डिवाइड करता है तो आंसर दोनों का ही क्या आता है? सेम आता है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट एमसीक्यू. नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन विच कंस्ट्रक्ट स्टेटमेंट in a program are executed in a sequential manner followed by one after the other with no possibility of branching of the another action. So there are the options. First is conditional statement, second is iterative statement and that is sequential. यहाँ पे sequential manner में इसको डाटा चाहिए तो that is sequential manner option is used. Okay, now next question is which statement among the following enable the execution of a set of to repeat till the condition is true. Means condition तब तक repeat होती रहेगी जब तक हमारी condition true नहीं होती. तो there are three options: conditional statement, iterative statement and sequential statement. So our answer is iterative statement. Okay, now fifth is if the conditional condition evaluate to a false. अगर हमारी first condition false हो जाती है तो then which block statement will be executed first? So their answer is else. अगर first condition हमारी false हो जाती है तो हमारी else जो block है वो execute होता है. Okay, now name the following two type of arithmetic operator. Tell me unary and binary. Next is three type of logical operator and or not. Next is two operator used in string, concatenation for addition, replication for multiplication of the string. Now next is this statement which used to evaluate only one condition. सिर्फ एक ही condition evaluate होती है, that is if statement. The procedure to write the step of a program in a well defined way, that is algorithm. Algorithm में हम पूरे step के step define करते हैं properly. So I hope you understand all the thing. Thank you. Have a nice day.